Markets with KR में आपका स्वागत है. This is literally the fourth time I'm recording this video. Hathway Internet ने मेरे को धोखा दे दिया पहली 3 बार, so hopefully this time my mobile data does not give up on me. Now, starting things off with an announcement. So tomorrow, excited to share that I am, having Anshul Gupta on my podcast. So Stock Markets with KR पे अंशुल गुप्ता का एक पॉडकास्ट एपिसोड आएगा very soon. And that podcast also has a Q&A on fintech investing and financial accessibility. So अगर आपके पास कोई भी questions है related to how to run a fintech company, how fintech companies work in India, investing पे कोई भी है या फिर financial accessibility मतलब जनता को फाइनेंशियल अवेयरनेस और एजुकेशन कैसे देते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैसे उन तक पहुंचा सकते हैं, then make sure you comment your questions in the comments of this video, or you tweet at me at markets with KR is my Twitter handle. So you can do that, and we'll cover your question most likely. So starting with the charts now, hopefully we'll cover some ground soon enough. निफ्टी का चार्ट है. मैंने एक्चुअली ये रिकॉर्ड करने के टाइम पे ही पहली बार देखा था. So what we can see on the hourly chart is that Nifty has formed like a triple top. So that triple top, if I'll just highlight here, मैं इससे ही highlight कर देता हूँ. Somewhat of this. तो ये एक हो गया और almost इधर भी है. But normally ये resistance दिखाता है. Normally this is a bearish sign, but I feel this could be a bullish sign. Reason being, this was one low, this was another low, और फिर दूसरा जो लो बोल सकते हैं कि इधर आज के लिए तो इसने इधर ही लिया है, which means कि price is finding support earlier, price is finding support at higher levels, which means buyers higher levels पे खरीद रहे हैं, which indicates कि there is a chance that we could see this being broken. अभी अगर obviously अगर ये टूट जाता है लेवल 80H का जो फिलहाल जो लेवल है, then my view is 986 trend based fib extension, obviously 16,000 psych level भी है. So that is going to be my view for Nifty swing basis पे. अगर आज की बात करें, we can see previous close support तो था, so we can see there was some consolidation here, and then we saw that previous close तोड़ दिया, फिर अच्छा सा ऊपर गया है. ये 835 लेवल पे भी उसने थोड़ा सा सपोर्ट भी लिया है, so all looks good to me. But second half में, in fact, towards the end of the day after 2 o'clock, we can see RSI 60 resistance. So थोड़ा सा momentum down हो गया था in the last 2 hours or so. And 60 minute पे देखते हैं, we can see RSI is at 60. So let's see how it goes. Moving averages देखें तो यार सब moving averages से ऊपर ही है. There's nothing to really talk about here, to be very honest. 733 पे आ सकता है, if it falls. So let's see how it goes. Coming to Bank Nifty now. Bank Nifty has actually had a much better day compared to Nifty. And what we can see here is कि मैंने कल बोला था कि one of two things will have to happen. Either ये जो bearish channel है उसको तोड़ेगा, which means Bank Nifty is bullish, और ये bullish channel है उसको तोड़ेगा, which means Bank Nifty is bearish. So if I just zoom out, which we can see is ये बुलिश चैनल है उसको कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये बेरिश चैनल को तोड़ दिया है. दैट्स अ बुलिश साइन अकॉर्डिंग टू मी. सो मेरे हिसाब से अच्छी चीज है. एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ से देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया था, यहाँ पे सीआईपी से सपोर्ट लिया उसने, यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इट इज ब्रोकन दैट रेजिस्टेंस सिंस आई थिंक 8th जून. सो जून में उतना प्रैक्टिकली तोड़ा ही नहीं है ये लेवल, और अभी तोड़ा है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. 35,300 तोड़ा है. आई थिंक द नेक्स्ट लेवल इज 35,700. All of these levels are there in the description, so you make sure you check the description, और सब levels मालूम पड़ जाएंगे. Coming to the other levels, again, all of those levels will be there in the description, so make sure you check out the description. It has those levels, plus it has got a ton of other resources as well. So that's what I am looking at in Bank Nifty. Now coming to the top stocks. टॉप स्टॉक्स में मैं एक स्टॉक मिस करूंगा, और वो जानबूझ के, बिकॉज वो स्टॉक का इन डेप्थ एनालिसिस मैं बहुत जल्दी रिलीज करूंगा. सो यू विल फाइंड दैट आउट व्हिच स्टॉक दैट इज. एंड व्हाट वी आर सीइंग हियर इज रिलायंस काफी गिर गया. रिलायंस डाउन 2.25%. So after all, looks like this double top almost worked, and once 2192 was rejected, it really came down. अभी 2125 भी reject किया है, that's not a very good sign.
बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। अगेन मेरे investing.com के आर्टिकल पे मैंने ये सब लेवल्स मेंशन किए थे दैट ओके दीज लेवल्स देयर अ वेरी गुड चांस इट कैन, इनफैक्ट मैंने तो बोला था इधर तक भी आ सकता है, 2050 के आसपास तक भी आ सकता है, बिकॉज दैट इज हाउ रिलायंस इज मूव्ड. So there's still a chance that it can come down to that level. And मेरे हिसाब से these levels are good to accumulate. और गिर सकता है. लास्ट टाइम भी एजीएम के बाद ही गिरना सब चालू हुआ था. So there's a chance that all that can happen. But I would personally look at this stock more for just buying at dips. मेरे पास holdings है. Again, this is not a recommendation. This is just what I am doing. So just thought I would share that. Next stock that we're going to talk about is HDFC Bank. And HDFC Bank, as we can see, is approaching 1529. That resistance zone is being approached. So अभी फिलहाल तो यही zone के अंदर है. आज थोड़ा वो higher levels पे price rejection हो गया. RSI is dot at 60.00. So perfect, right? So that's what we're seeing with HDFC Bank, and these are the moving averages. और कुछ है नहीं, आज थोड़ा volume कम था HDFC Bank में. That is what we're seeing. So let's see, possibly अगर नीचे आता है ये gap fill कर सकता है, which would be my first level, so 1500 के आसपास. Next stock that we've got is Infosys, and Infosys में हम लोग को दिख रहा है that's a very good strong pattern here. So हम लोग देख सकते हैं price नीचे आया था, but then it took very nice support. So I think that's good. Volumes are also pretty decent. So overall, I think Infosys काफी अच्छा दिन हो गया है Infosys के लिए, all things considered, I'd say. Next stock that's there on our list is HDFC. HDFC पे हम लोग देख सकते हैं 2500 levels have been supported, accepted. इसने ये hammer pattern जैसा form किया है, which is the bullish sign. So I think as long as ये hammer के high के ऊपर है, things should be good. Next stock on our list is ICICI Bank. And ICICI Bank, we can see a very strong move. So 633 कल उसने accept किया था, I think just line पे था. And now we can see एक strong almost range breakout हो गया ये. अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं like this, if you want to do it strictly, we do it like this. अगर एकदम closing basis पे करना है तो ऐसे कर सकते हैं. So we can see that almost trend line breakout, range breakout has happened. But I feel obviously ये थोड़ा cluster में ही है, so I'm not quite sure अगर ये अभी trending जैसा बोल सकते हैं. Or volumes actually are not that high. Volumes are still average. So let's see what happens with ICICI Bank. Next stock that we're going to talk about is Kotak Bank. And Kotak Bank, अगर मैं करता हूँ, Kotak Bank में हम लोग देख सकते हैं कि एक डोजी फॉर्म हुई है. I think this doji is just below the 200 DMA. Yes, it's just below the 200 DMA. So let's see what happens with Kotak Bank. It is still in the zone. I think 1700 1720 तक वो जोन में, उसके नीचे वो ये 1670 लेवल रीटेस्ट कर सकता है. That's what I'm looking at. नेक्स्ट स्टॉक इज SBIN. SBIN हम लोग को क्या दिखा रहा है कि 420 के ऊपर ओपन हुआ, 420 सपोर्ट लिया, एंड नाउ इट्स अप. This is the highest close that we've seen in SBIN since 15th June. So almost 15 दिन के अंदर highest close है. I think that's a good sign, bullish sign. In fact, there are certain setups जिसके basis पे, जिसका entire basis है कि 15-day high, अगर 15-day close, highest close अगर 15-day का होता है, that's a breakout by that level. So there are several setups like that as well, and this might fulfill that criteria. Volumes कैसे? Volumes are fine, better than the past week or so, but not the greatest. Axis Bank, स्टॉक जो हम लोग बात कर रहे थे कितने टाइम से कि 3% के रेंज में था, आज उसने 3% का मूव दिया है. सो आई सेड कि वन साइड लार्ज मूवमेंट पॉसिबिलिटी है, आइदर अप और डाउन, एंड इट हैज चोजन टू कम अप. RSI हैज ब्रीच्ड 60, एंड दिस इज द स्टॉक जिसका कंप्लीट एनालिसिस करूंगा मैं over the weekend, and that will be available on investing.com, YouTube channel, Twitter, सब जगह पे basically. So make sure you are staying tuned for that. Anyway, that's it for this one. I hope you had a nice Friday. I hope you have an even better weekend. And make sure that you listen to my podcast with Anshul Gupta and ask all your questions, because hopefully they'll be answered. That's it for this one. See you next, and happy trading.